बिल्कुल हो रही है, वो भगवान का ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान नहीं है। तो पूरा आने के लिए तो क्या प्रैक्टिस करना पूरे आने के लिए छोड़ना प्रैक्टिस करना है, पकड़ना नहीं। छोड़ना है। हाँ, तो जो है उसको छोड़ना है। ये लगता है रेखा। हम्म? It's like Awareness. swimming and floating. Floating is easy, but we all hold ourselves, and then till we हाँ। release ourselves and relax ourselves, we can't float. Awareness. इसको अच्छा एग्जांपल दे दिया, बता दिया, होते दिया। ಹಾಂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಸರ್. भगवान को जानने के लिए छोड़ना सीखना है, उसको बोलते हैं वैराग्य। लेकिन छोड़ना आसानी का तो छोड़ते हैं लोग। क्या आसानी का छोड़ते हैं? मुझे भगवान को पाना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं बीवी को छोड़ देता हूँ और बच्चों को छोड़ देता हूँ, मैं काम छोड़ देता हूँ। वो तो बड़े आसानी की चीज़ है। छोड़ देना है बीवी को नहीं, बच्चे को नहीं, काम को नहीं। छोड़ देना है जो आपको आप समझते हैं उसको छोड़ देना है। आप जिसको आप समझ रहे हैं उसको छोड़ देना है। वो आप सेल्फ आइडेंटिटी है ना, वो गलत आइडेंटिटी है, उसको छोड़ देना सीखना है, और कुछ नहीं। छोड़ने से मिलता है भगवान, पकड़ने से छूट जाता है। आप भी बताइए, आप क्या क्या पकड़ के बैठे हैं? आपको भगवान नहीं मिला है, इसका अर्थ यह है कि आप कुछ पकड़ के बैठे हैं। वो क्या पकड़ के बैठे हैं? हाँ? कुछ नहीं पकड़ के बैठे, भगवान मिल गया? हाँ, नहीं मिला। हाँ? आप क्या पकड़ के बैठे हैं? मन को पकड़ना नहीं छूटता नहीं छूटता है। हाँ? आप क्या पकड़ के बैठे हैं? हाँ। मैं पकड़ के बैठी थी, मैं जो कर रही हूँ मैं हूँ। छोड़ दो, भगवान मिलेगा। इतना आसान है। करता मैं हूँ ऐसा सोचती हूँ ना, मैं जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। हाँ, इतना तो आसान है भगवान को मिलना, भगवान मिलना। वही तो नहीं छूट पा रहा। वही सबसे कठिन है, देखने में इतना छोटा है। So Robin, what are you holding on to? मैं करता हूँ ऐसे। हाँ, I am the doer type of thing। I am the पकड़ doer। के बैठा हूँ। पकड़ के बैठे हैं, क्या पकड़ के बैठे हैं? क्या आप बताइए, ये काम आप कर रहे हैं? Tell me one thing which you are doing. What are you doing? हाँ, Listening right now. listening. Are you doing? Automatically it's happening. Then what are you doing? Sitting. Are you sitting? Mm, Who is sitting? Body is sitting. What are you? The conscious neither sits nor stands. So what are you doing? Watching. अभिषेक, आप किसको पकड़ के बैठे हैं? My desires.
डिजायर्स है, अरे कुछ तो फुलफिल करो ना। हाँ? So प्रॉब्लम डिजायर्स में प्रॉब्लम क्या है? डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानी को डिजायर नहीं आती है? ज्ञानी एनलाइटेड डजंट हैव डिजायर? He will have, but he doesn't get attached to it. What is the difference between Dani and Adnani in terms of desire? Gyani may, it's very difficult to tell for me. ज्ञानी को भी डिजायर आती है, अज्ञानी को भी डिजायर आती है। डिजायर के फर्क, ज्ञानी और अज्ञानी के डिजायर में फर्क क्या होता है? ज्ञानी के डिजायर होते हैं लोक कल्याण के लिए, नथिंग सेल्फ इंटरेस्ट। अज्ञानी के डिजायर होते हैं उसके फायदे के लिए। ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ? ನಂಗೆ ಕೂಡ ಸಿ ಭಗವಾನ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ by dropping, that's called vairagya. So what are you holding on to? I think I'm still having difficulty to get rid of all these roles. I mean, the role identification, I don't think I had gotten rid of it yet. If I did, I won't come here. Thank God. I have a couple of more students. So why are you holding on to roles? I don't want to. I think it's just taking time. How does it take time? I suppose, I don't know, lack of, Dropping doesn't take time. Holding takes time. How many years are you married now? 37, 38. So that's holding. It takes time, but dropping doesn't take time. I can drop for a second, but it comes back. When the same situation arises, it comes back, so you drop again. So it's supposed to take time. So Dr. Narayan, what are you holding on? I don't think I'm holding on to anything. It's an apparent reality. I know it is so true because I know I'm Atman. But this role of a human being is making me sit here, listen to you, Listen to talk to you. That I'm realizing. But I do not know when that flash will fashion to me to realize it. That's what I know. Okay. So Pragya, what are you holding on to? A lot of things. Like what? Like she said, I think to the roles what I'm playing, Hmm. the bonding with those roles what I'm playing on those. Yes, holding on with the families. No, I didn't say don't leave the family. Oh. I never told you. The roles associated with the family. Association with the, I'm not telling leaving the family. Get up, get up, get up. Why? Get up. Get up. Okay. Have you seen this ramp walking? Yeah. Now undo, undo. Oh. Undo. Please No. start clap. Do. From this way. Yeah. Okay. Okay. Now you sit down. So what did you do right now? Walk. Huh? I walked. Who walked? Shobha walked. While walking, did you forget that you are acting ramp walking? No. Huh? No, you didn't know. No, I knew I'm doing ramp walk. You know you are doing ramp walking, right? You didn't forget that, right? No. But then how you forget when you become mother? This is all the difference between self-realization and not self-realization. Yeah, because we were not knowing all these things earlier. Now we are trying to get into it. We were ajnanis all these days. Who was Adnani? Ayyo. Did you forget that you are walking ramp walking? When simple act like ramp walking, you don't forget that you are ramp walking. Then how did you forget that you are a mother? How did you forget when you become a mother, daughter? How did you forget that? Become something. All these are roles, acts.
ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೌದು ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಕತೆ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿರಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತಾ ನೀವು ಯಾರಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದು ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay. I'm a mother and I have children, so anything that happens. When did you become mother? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. Because there is that connection. What connection? ಈಗ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, I never do, so it's just few seconds, so I know. So you keep on producing children, is it? I never do means? No. The product is there, it's reacting with you. When did you become mother? I might have become a mother, but because of the result of it, I still have that relationship. It takes time. It was a role of a mother. ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It's not hard. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, but you know, to break it is what is hard. What is there to break? ನಾನು ಬರೀ ಅದ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Just to say it's just a role, I'm not going to be affected by what happens to my children. You or my please family or tell anything. me, what are you holding on to? Please understand, I am not this thing. No, no, no. I am trying to understand because I can't understand what you are saying. ಅಲ್ಲ, I understand what you say. If I don't identify, I won't be affected. I can just act but not react. ಅಲ್ಲ, I know it by theory. But when it comes to practical, How can you become mother? How can you become a doctor? No, I know what you said. We don't. That's just the part we have. We don't become that. Yeah. That's just the part. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು part and ಮರಿ ಅಂತ. Huh? You're telling us to forget the part. No. Yeah, it's a role. Yeah, How forget can you it. become the role? I got that. It's easy to hear. But it's hard to get into my No. system. Why it is hard to get into? That's why I'm asking you the question. Please understand. My question is, why it is difficult to get out of the role? ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. Attachment to what? ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮದರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಂತ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. Why are you holding on to that? No, we don't intend holding, but we're having hardship to You break it. are holding, my dear. No, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು holding ಅಂತ, but We are holding. holding, but it's getting harder for us to break it. I am trying to point out you why are you holding. Once you understand that, you will drop it. Okay, tell you why Okay? I'm I am not telling you. I am going to point out to you. Okay. You have to recognize that. There is also some fear, right? Come on, you tell me. When Tell you me. say like, why are you holding it? Exactly. In our situation, it's not difficult to let it go because what will happen? is If you drop whatever you have, there's a deep fear grips. You become nobody. The fear of nobody is becoming nobody is the biggest fear. What are you, my dear? If without a doctor, not a woman, not anything. I won't have problem. Huh? I will not have Then what are you holding on? I don't think I hold on, at least consciously I don't feel I'm holding Sure, on. mother. Huh? I feel it, but not. ನಾನೇ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Obviously, but I don't know about the fear. Maybe it is just a little, like he said, I don't know, maybe still I have not been able to get detached completely, maybe. Who has to get detached? Is Atma attached anytime? No. Atma can never be attached to anything. Why are you holding on to the role? You please tell me. Which role is most holding on to you? I don't know. I think it depends on the time and place.
when something bothers, then I realize, well, that's the part you're playing. You tell me what bothers you most. Oh. What role bothers you most? Husband thinks so. The intellect part. Huh? The intellect. What is intellect? You asked me what bothers me most. I said the limited intellect. No. I'm not saying the cause. I'm saying what role bothers you. See, ultimately, we have become our roles. What role you are holding on strongly? The question is for each of you. Right? The question is for each of you. What are you holding on strongly? Out of 10 roles, one role you'll be holding on strongly, no? What is that one role you are holding on strongly? हाँ? हाँ, वो मैं क्या है? क्या मैं है? जब आप मैं बोलते हैं आपको क्या याद आता है? करने वाला मैं हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ मैं करता मैं हूँ। वो करता पूरा भगा देंगे। अभी जब आप मैं बोलते हैं तो क्या है? हाँ? What identity is holding on to? I'm thinking. If you are thinking that means that identity is not strong because it's not. Huh? Very good. That's right. Still, she's not sure that she's not sure. That's a very good thing because not holding on very strongly. You can drop it very easily. इसको छोड़ सकता है बहुत easy. Maybe that is a problem. Huh? I don't know. Maybe that is a problem. Maybe I don't know what I hold on to. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. Maybe it is not a problem. Maybe I think it's a problem. Then what is that problem? What is that you are holding on to? To be honest, I don't know. I hear you. If I heard everything, I should be perfect. I shouldn't be coming here. You are not perfect is what you are holding on to. Must be. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ? What is that? Are you holding on to I am not perfect? Maybe in a way, I don't know. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know what I'm holding on to. There should be something which you are holding on. No, otherwise you will be pure self only, right? Mm-hmm. You should tell me what is that you are holding on to. Are you holding on to I don't know? Maybe. The self cannot be known. But I do. Once I am, I will. That's it. Really, what you are holding on? आप क्या किसको पकड़ के बैठे हैं? प्रभु जी नहीं कुछ नहीं पता। आत्मा मिल गया? नहीं मिला, कोशिश तो कर रही हूँ। कौन कोशिश कर रहा है? एक कोशिश करने वाला कौन है? मन हाँ? मन शरीर छोड़ा हाँ एग्जीक्यूटिव प्रभु जी किए हैं छोड़ा सब तो आत्मा मिल गया। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो है वही समझने वाला कौन है? जो आपको एक्सप्रेस करने के बताने में हाँ, कौन है? आत्मा। ओके सो आपका क्लास खत्म हो गया, अभी आप जाके सो जा सकते हैं। सो सकते हैं। सो प्रज्ञा व्हाट आर प्रज्ञा व्हाट आर यू होल्डिंग ऑन? lot of relationships in my life. That's what is pulling me down. That's what I believe. Too much of emotional attachment to people around me. Relationships and emotional attachments. So why there is emotion?
When you love them, there's no emotion. Love is not an emotion. Emotion is a commotion. Maybe fear of losing them, Ah. or them not liking me, or maybe I want to please them. Ah. Things So like that. there is a fear behind relationships. What is the fear behind relationships? Losing them, If you lose them, what will happen? I'll be in pain Why you will be in pain? because they're no longer with me and I like them and I wanted them to be with Loneliness. me. Loneliness. So you are afraid of loneliness. That's why you have relatives. Yeah. So not because of love. The relationship are out of fear. Yeah, I think so. Correct? Yes. Yes, it's a fear, yes, of myself maybe because I'm going to be the loser. Ah. So all your life you are lying yourself to saying that I love relatives. In reality, you are afraid of fear is going in love. So then what are you afraid of? I can let go now. It makes much No, more no. sense. What are you afraid of? It's not over. I mean, with this statement, I'm not afraid of anything anymore, right? No, frankly, I'm telling you, I don't have that fear of losing. So your relatives will disappear. Then what will happen to you? I think nothing should happen to me. What fear was holding on to you? You are holding on. The fear of me being lost or something like that. You being lost is the fear. Yeah. Okay? Isn't it? That was the fear you are holding on to. And that's why you have relatives. That's why you have friends. Correct? Now, why fear of losing yourself comes? Being lost comes? I think because I have made myself so attached to them. It's that. No. Because I become nothing without them, so I want to become something. Because I feel limited. So by gaining something, I feel something. I become. Exactly. The fear comes, I'll get lost. Correct? Suppose there's no possibility of getting lost. Then where is the fear? Huh? Then there's no fear. Then there's no fear. Now, you getting lost, the fear of getting lost is coming because you are considering yourself as a body, mind and intellect. If you are not body, mind and intellect, where is the fear of losing? Then there's no loss. Huh? Then there's no loss. So please repeat. Nanu ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. See, Atma can never get lost because Atma is everywhere, it is there. But you are holding on to body, mind and intellect, thinking that you are the body, mind and intellect. If you drop that idea, there is no way you can get lost anywhere. You understand? So why are you holding on to I am the body, mind and intellect concept? Why? No, but suppose, take the example of relationship. Suppose police catches me and puts me into jail. Huh. I need relationship, somebody to take me out of the jail. Huh? So this automatically brings me attachment So to somebody this relationship. who helps you, right? Somebody helps you, but that has nothing to do with your fear. So this also maybe is a cause of fear, right? Attachment and all. That's because you think you are the body, mind and intellect. Atma cannot never be put into jail or outside. Atma can never be put into jail. He said if somebody puts into jail, somebody comes and it releases you. But you are not the body, mind and intellect. You are the Atma. Atma can never be put into jail. Have you heard of Guru Tegh Bahadur? आप गुरु तेग बहादुर के बारे में सुना है? सिख गुरु थे वो. कश्मीर में बहुत सारे हिंदू लोगों को औरंगजेब कन्वर्शन कर रहा था. उनको क्या करता था, मारता था और
गो मांस, गाय का मांस खिलाता था और बोलता था आप मुसलमान बन गए हो। सारे हिंदू लोग घबरा गए। वो गुरु तेग बहादुर से कंप्लेन किया। गुरु तेग बहादुर पंजाब में थे, उनसे जाकर बोले ये क्या हो रहा है, हमारे लिए औरंगजेब बहुत तकलीफ दे रहा है, कन्वर्शन कर रहा है। तब गुरु तेग बहादुर ने उनको औरंगजेब को एक संदेश भेजा, उनको तकलीफ मत दो, आप मुझे कन्वर्ट करो, मुझे आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं इन लोगों को बताता हूं कि सब लोग कन्वर्ट हो जाओ, है ना। सो औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुलाया। वो उनके बेटे के साथ चले गए, 2 बेटे थे। औरंगजेब ने बताया अभी कन्वर्ट हो जाओ। वो बोला नहीं, मैं इनका नहीं कन्वर्ट होगा। तब औरंगजेब ने बोला तुम्हारे बच्चे लोगों को मार देता हूं, आई किल योर चिल्ड्रन। उनके आंखों के सामने उनको बच्चों लोगों को टॉर्चर करके मार दिया। बाद में गुरु तेग बहादुर को मार दिया। लेकिन फियर का, देयर इज नो फियर एट ऑल, क्योंकि जो अपने आप को आत्मा समझते हैं उनको कोई फियर ही नहीं है। फियर चला जाता है। आपका फियर आ रहा है रॉन्ग आइडेंटिटी से, गलत समझने से फियर आ रहा है। जब आपके अपने आप को आत्मा समझते हैं तो फियर का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप वाइफ बन गए तो डाइवोर्स हो सकता है, डाइवोर्स का फियर हो सकता है। लेकिन आप वाइफ ही नहीं बन सकते तो डाइवोर्स कैसे हो सकता है। ऐसे आत्मा सभी जगह है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, तो फियर कहां से आता है। सो आपका फियर का कारण है concept of body and mind. रॉन्ग आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड। जब रॉन्ग आइडेंटिटी चला जाता है तो आपका पूरा इमोशन उठ जाता है, इमोशन चला जाता है, क्योंकि इमोशंस आते हैं फियर से और इमोशन से आते हैं रिलेटिव्स। जब द फियर आता है वो रॉन्ग आइडेंटिटी से, जब रॉन्ग आइडेंटिटी चला जाता है तो फियर चला जाता है। सो आप मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं, है ना। किस भगवान के मंत्र बोलते हैं? All gods are what my parents have taught. अभी एक गॉड का मंत्र बोलना है, वो मंत्र सिखा देता हूँ। एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, उसको बोलते हैं आत्मा, है ना। रोज ये मंत्र पाठ करना है। नानु नानेंबुदु नानल्ला इदेह मन बुद्धि नानल्ला सच्चिदानंदात्मा शिवनानु नाने शिवोहम शिवोहम जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ। सच्चिदानंदात्मा शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम। इसको बोलते हैं महामंत्र। सारे मंत्रों से अधिक मंत्र ये मंत्र है। 4 दिन पाठ कर दीजिए, सब जो फियर है ना वो सब उड़ जाता है। जब आप भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप हैं, भगवान से अलग हैं। जब आप भगवान को समर्पण करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान ही रहता है, और आपका फियर कहां से आता है? ये महामंत्र है, इसके सामने कुछ मंत्र नहीं है। अब बोलिए आप क्या पकड़ के बैठे हैं? शरीर मन बुद्धि को पकड़ो।
अच्छा, ये देखेंगे शरीर मन बुद्धि को कैसे छोड़ना है। ये क्या है? मोबाइल फोन है ना? ये मोबाइल फोन आप हैं क्या? मोबाइल फोन आप हैं क्या? क्यों नहीं? क्यों मोबाइल फोन आप नहीं है? वस्तु क्या होता है? जिसको आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो वस्तु है। जो वस्तु है वो आप नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है ना? जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो वस्तु होता है। सो देखने वाला और वस्तु अलग होता है। ये तो आसानी से समझ सकते हैं। देखने वाला, देखने की चीज देखने वाला से अलग होता है। इसमें कोई डाउट है? डाउट है क्या? सो ये कौन है? सूर्य। सूर्य आप है क्या? आप सूर्य को देख सकते हैं, इसीलिए आप सूर्य नहीं है। ये शरीर आपका शरीर है। आपका शरीर आप देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते? देख सकते देख नहीं सकते हैं? देख सकते हाँ, है ना? तो आप कैसे बन गए शरीर? जो आप देखते हैं वो आप नहीं है, है ना? जो आप देखते हैं वो आप नहीं है। आप इसको इतना तो समझ सकते हैं, वो सूर्य है, मैं यहाँ हूँ, ये मोबाइल है, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल देख सकता हूँ, मैं मोबाइल नहीं हूँ, इतना समझ गया। शरीर आप देख सकते हैं, तो आप शरीर कैसे बन गए? और एक मंत्र बोलिए। जो जो मैं देख सकता हूँ, जो जो मैं स्पर्श कर सकता हूँ, जो जो मैं सुन सकता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। शरीर को मैं देख सकता हूँ, शरीर को मैं स्पर्श कर सकता हूँ, इसीलिए मैं शरीर नहीं हूँ। अरे इतना आसान है? हाँ? But then why it pains if I can? Pain is experience, na? Pain is experience, na? Experience. Any experience is different from the experiencer, right? Without the experience of being there, the pain is not there. If a mind is somewhere or There if is, not have consciousness, we will not feel pain. there is pain and there is this experience of pain, there is experience separate. Yeah, but then you don't have to call it is my it is I am experiencing, no? I am experiencing it. No, what is it? Okay. So let us make a little bit more clear. This is, बोलिए. Lift your hand. This is my right hand. This is my left hand. Okay. I have a hand, but I am not hand. Okay. I have a pain, but I am not in pain. ये confusion करते हैं हम. What is my? What is I have? Because I, there's a problem there. I have pain, but I am not pain. That distinction disappears when there's a pain. My body has That forgetfulness comes. My body has a pain is different from I am pain. I am in pain. Are you able to understand? In usual terms, what he's telling is that he has pain, Huh. I have pain, my body has pain, over a long time becomes I have pain. No, That's that's a problem with the English language. I know.
That's the problem with the English language. English language has a problem. The problem of English communication problem, you are converted to your problem. Yeah. My body has pain never because I have pain. But I am experiencing the pain, right? That's right. There is pain, there is experience of pain, but I am experiencing of pain is something you have to analyze. So you should say, my pain, my body continues to have pain. Rather That's the than- right way. Okay. I am experiencing the pain, right? Is the language grammatically correct? Right? This is wrong. You are saying that I am experiencing. My body is experiencing the pain. That's right. So what happens in the process? Okay, I'll give you a very simple example which you can understand. Right? Everybody understands cricket now? The सब body cricket जानते affects हैं the mind. हाँ? Body affects the mind. ठीक है, doesn't matter. And But still, it doesn't. Nothing affects and you. by mind, you get agitated. Still, nothing affects you. That's not what I'm saying. Trying to say. Ultimately, nothing affects you. हाँ. So if your mind is agitated, then how can you say that it's not affecting you? That's because you are not the mind. That's what I'm trying to say. The distinction is you are losing. Because of that, you are getting affected. So even after self-realization, we can get agitated. Even after self-realization, there can be pain. But there is nobody says I have pain. I am pain. The mind itself disappears after self-realization. The mind disappears is not in the sense. Mind becomes tranquil. Understand? Mind disappears. He doesn't function in the world. He is not a moron. The mind's function is agitation. That agitation disappears. Even if there is a pain, mind is very peaceful. The mind's abnormal behavior stops. Mind's normal behavior is jumping and agitation. When it stops that, it's like a fire becoming cold fire. It's not a fire. Similarly, mind which is normally getting agitated will always remain peaceful. There's no mind. Do you understand what I'm saying? The mind loses its normal or abnormal tendencies. Right? We'll come to that. First, you understand I am the body. There's a difference between I am the body versus I have a body. Right? I am the body versus I have a body. Is there a difference? फर्क है ना? मैं शरीर हूँ और मुझे शरीर है. इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है? मैं शरीर को अपने आप को मान रहे हैं. हाँ. I am the object. हाँ. But I have a body that is I also have an problem. object is different from I am the object. Exactly. Right? But I have a body that is also a problem, right? Why should No, I it's okay. I have a body is not a problem. Having something is not a problem. I'll tell you why. क्रिकेट देखा है? आईपीएल मैच देखा है आपने? आपने देखा है? आईपीएल मैच चल रहा है. इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है ना? पाकिस्तान और इंडिया मैच चल रहा है. पाकिस्तान खेल रहा है. सिर्फ 6 रन बचे हैं. पाकिस्तान ने 6 रन मार दिया तो इंडिया हार जाएगा, नहीं तो इंडिया ही जीत जाएगा, है ना? वो लास्ट बॉल है, वो 6 रन मार दिया, इंडिया हार गया, है ना? सो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है 14 लोगों को हार्ट अटैक हो गया. 14 लोगों को हार्ट अटैक हो गया. क्यों हुआ? इंडिया जब हार गया 14 लोगों को हार्ट अटैक हो गया. क्यों हो गया? हाँ हाँ, है ना? इसमें देखिए, तमाशा देखिए. हारने वाला टीम इंडिया को $5 मिलियन प्राइज मिल गया, 40 करोड़. जीतने वाला टीम पाकिस्तान को 10 मिलियन प्राइज मिल गया, विच इज 40 करोड़. 5 मिलियन 20 करोड़. 20 करोड़ पाकिस्तान टीम को मिल गया, 20 करोड़ इंडिया टीम को मिल गया. वो टीवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उन लोगों को 500 करोड़ मिल गया. अरे आपको मिल गया हार्ट अटैक, ये कैसे हो गया? ये क्रिकेट के तरीका समझ गया तो आपको आत्मदान का तरीका भी समझ होता है. आपको ये 14 लोगों को हार्ट अटैक, उनका कुछ पैसा मिल गया क्या? वो हारने वाला और जीतने वाला इंडिया टीम कुछ पैसा दे दिया उनको? अरे हार्ट अटैक उनको क्यों होगा, ये बताइए मुझे.
क्यों हुआ? They thought they lost. हाँ, उन्होंने सोचा कि मैं हार गया। जब आप नहीं हार रहे हैं, उसको आप पर्सनली लिया तो आप फंस जाते हैं, हार्ट अटैक होता है। जब आप शरीर नहीं है, आप शरीर को अपना आप ले तो फंस जाते हैं। समझ गए आप? समझ गए? ये बोलिए भाई, अभी आप शरीर है और आपको शरीर है, आपके पास शरीर है। आपको ये कैसे कंफ्यूजन होता है कि मैं शरीर हूं? आप कैसे कंफ्यूजन होता है मैं बताता हूं। मनीषा जी, आप कितना मोटे हो गए हैं, थोड़ा दुख लग रहा है। नहीं तो प्रज्ञा के तो मोटे नहीं बोलते हैं, सुंदर तो लगते हैं वो। बहुत खुशी होते हैं जब आपको कोई खुशी देता है और दुख देता है तो हम शरीर बन जाते हैं। तब तक हमें याद नहीं रहता कि हम शरीर हैं। हाँ? क्या? जब कोई आपको मां बोलती है, बहुत खुशी होता है, तब हम शरीर बनते हैं। ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಮಗ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಯು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡು ವಿತ್ ಯು. कोई आपको बोलता है अरे कितना सुंदर है आप, बहुत खुशी होते हैं, तब तो शरीर बन जाते हैं आप। हा? जब दुख होता है तब शरीर बन, जब दर्द होती है हम शरीर बन जाते हैं। आप ये नहीं है ना, मुझे शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये समझदारी आपको है तो आप कभी नहीं फंस जाते हैं। जो क्रिकेट देख रहे हैं उनको समझदारी है कि तो पाकिस्तान टीम हार रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान टीम जीत रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, इंडिया टीम को पैसा मिल रहा है, तो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन पर्सनल ले लेंगे तो फंस जाते हैं। सो जिंदगी में कितनी चीज़ आप पर्सनल ले रहे हैं? क्या रॉबिन? हाँ, काफी चीज समझ गए? आप शरीर कब बन गए? प्लीज टेल मी, आप शरीर कैसे बन सकते हैं? गिव मी रीजन व्हाई यू कैन बिकम अ बॉडी ना। आप शरीर कैसे बन सकते हैं ये बताइए मुझे समझ में नहीं आता है कि आप शरीर कैसे बन सकते हैं। आप बताइए, शरीर कैसे बन सकते हैं आप? शरीर को देखते हैं आप, शरीर का अनुभव होता है, जो अनुभव होता है आप नहीं है ना, आप कैसे शरीर बन गए? ಏನು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಬಾಡಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಂಡವಾಳ. How can you become body? Please give me one reason how can I become body? Huh? Give me one reason how you can become body. क्या भाई अभिषेक? What is the question, na? So give me one reason why you are a body. Not the body, but I feel I am a body properly. I don't know. That's because you are not applying your discrimination, na? Theoretically, I agree to you whatever you said. Huh. But as you said that, how do you identify with the body? For example, I met with an accident. Of course, I'll have pain. Huh. The Of body course, will this have. body will have pain. Correct. But I'll also feel it. No. You don't feel it when you have pain. Body has a pain. That's the point. You are identifying like Pakistan team India team हार गया. You got heart attack because you identify with that. The pain is because you are identifying with that. That's what I'm trying to say. That identification is causing the problem for you. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನೋ. So why are you taking it to yourself? Why Pakistan team winning? Why should I give a heart attack to you? That you don't understand. Girls don't understand. They don't see cricket. Okay, but they see this soap opera. Saas Bahu serial. Very popular. They open the channel, switch on the TV, there will be somebody is crying. Oh, You start crying. and you start crying. Okay, the moment somebody Bahu cries, you will remember his saas. Huh? Why you are identifying with the character in the TV here? क्या बॉस? हाँ? अपना समझते हैं. हाँ सब भी आता है. सास बहू, मेरे सास भी यही थी. मैं शादी करके घर में आ गया, मुझे तो पानी भी नहीं आ रही. आप शुरू कर दिया. वो सास चला गए, अभी टीवी का सास आपका सास बन गया, अब टीवी का बहू आप बन गए. अभी जब करते समय हम समझते हैं मैं कर रही हूँ, तो जब कुछ हमको होता है तो हम समझते हैं हमको हो रहा है. So हमको पहले वो छोड़ना, हम कुछ कर रहे हैं तो बाद में. क्या डाउट है क्या रॉबिन? सॉरी रॉबिन, डाउट नहीं है. क्या जी? सुषमा जी ना? हाँ, सुषमा जी बन गए. छोड़ रहे हैं. डाउट है इसमें? ये शरीर के बारे में हो गया. अब मन देखिए. आप मन देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते? आप मन देख सकते हैं? इसमें इस रूम में कोई मन देख सकता है? देख नहीं सकते आप मन? हाँ? At least I have not seen. इस रूम में किसी ने मन देखा है? अभिषेक? विचार आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. अरे इतना याद आते हैं मेरे मन में, ये याद है मन. विचार जो आता है मन में, थॉट जो आते हैं वो मन. थॉट आपको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है. समझ में आता है. हाँ, जो समझ में आता है वो देखना ही है, अंदर से देखना है ना. जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप नहीं है. अब मन आप कैसे बन गए? मन में थॉट्स आपको दिखाई नहीं देता है, तो आप मन कैसे बन गए? मन में कैसे फंस जाते हैं? Any madam? Huh? Can't you see the thoughts? Observe the thoughts. That means thoughts are being seen. What is seen is an object. But you are the subject. It's different from the object. Right? So then how can you become thoughts? Huh? समझ गए? समझ नहीं? कुछ तो बताइए. समझ गए? आप विचार को आप देख सकते हैं. सो जो विचार देख सकते हैं वो मन है. सो मन को आप देख सकते हैं. जो आप देख सकते हैं वो आप नहीं है ना. सो आई एम ए मदर, राइट? आई एम ए मदर is not a thought. So you are not able to see the thought. Then how you become thought? Please tell me. How you can become a mother? Because I am a mother is a thought, right? And you can see that thought. How can you identify with that thought? You understand what I'm saying? Answer? What you see, it becomes an object. So that's you are not. That's you are not. Then how can you become that? You understand? Abhishek? Any questions? Thought is an object, no? What is an object?
You are the subject, no? How can subject become object? Identification with the thoughts, the persistent thoughts that I am this and all that. That creates an illusion. हाँ, अभी तो आप ठीक तरह की बात कर रहे हैं. So Robinson, are you getting what I'm saying? Huh? See, a subject can never become object, right? That's right. And object is what you see. Whatever thoughts you have, you can see it. So you can never become that. You understand? The very fact that you are becoming that is a confusion. Still the question remains, right? Who am I? We are not answering the question, who am I? We are answering the question, who am I not? The question, who am I, there's no answer. Because all your answers are objects. As far as object is concerned, we will never get an answer. That's what you are saying, right? If you focus on object, we will never get an answer. Never get an answer. But there is an answer. There is no answer as an object. As an There is an object. answer as deep silence. Basically, when we leave all those objects, that silence will come. Do you have to leave the objects? Do you have to leave the objects? Your problem is the objects or identification of the objects. Identification. So you have to leave the identification of the objects. You understand? The objects will be there. My association with it should be detached. You don't have to be detached. You Yeah, should I know know. that you are not. And that knowledge is called what? That knowledge is called prajna. That is called pragya. That is the meaning of prajna. Jna means know, to know. Prajna means higher knowledge. Right? Higher knowledge is one which knows the knowledge. Now please tell me, where is the confusion? Anybody has the question? So we'll give a 10 minutes break. You can go to toilet and you can have a cup of coffee, tea, whatever you want. स्वामी जी, मुझे एक क्वेश्चन हाँ. कि ऐसा जैसे बोलते हैं कि थॉट्स को ऑब्जर्व करना है मेडिटेशन करते वक्त, तो ऐसा कि थॉट्स आते हैं, दिखते हैं. दिखना मीन्स जो हम लोग उसको महसूस करते हैं, दिखने का मतलब जो बोलते हैं दिखना वर्ड, तो आई एम नॉट. हाँ, ठीक है. दिखना मतलब क्या, हमको ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि दिखना मतलब कुछ ऐसा पिक्चर टाइप का दिखता है कि नहीं, यही जो है जो समझ में आता है उसको देखते हैं. जिसको देखना आंखों से वो रूप होता है. थॉट का समझ में आना है. हाँ. सो अब जाकर काफी टी पी सकते हैं. लेट आते हैं. Basically, we can continue playing the roles what we are playing without associating ourselves with it. You have never associated. No. I am identifying that I am that and I am doing that. That is the main problem of life. So I can still basically continue to play the role of a wife. You will do much better way. Without me being there. Then your role will be much better, much sharper, much clearer. Because there is no fear of anything. An actor, Amitabh Bachchan, can play the role of a villain very beautifully as well as a hero very beautifully. Because he is not afraid of becoming villain or hero. Now you are afraid of losing your identity and becoming something. Yeah, so I actually can perform better than You will be much better. Henry? ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ See, it is only self-identity, that's the issue. You are identifying the wrong thing. The subject identifying the object is the problem. I am a mother is an object, that's a thought. You start taking it as a subject, that's the problem.
Now you please tell me, if you drop all objects, what remains? If you don't identify the object, then what remains? That's self. That's self. And self cannot be realized. Self is always there. Only this confusion can be removed. The two things are consciously and subconsciously. Depending Attachment. ಕೆಲವು So, ಎರಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಅಲ್ವಾ? You'll get trapped in that. Many times, consciously, I know I'm not. But subconsciously, ಆ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸೋದೇ ಈಗೋ ಹೋಗಿಸೋದಲ್ವಾ? For a self-realized person, that will never come in dreams also. That identification with the thoughts will disappear. Thoughts will be there, but thoughts, identification will be there. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ objectification. Mind said objectification. Next is intelligence. If that also goes out, then there's nothing else. There is that self. What remains is self. Yeah. What is not is all the kalmashas. Very, very simple. Other complex, other simplicity, if other simple, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅರಿವಾಗಬೇಕು. Awareness. In every walk of life, awareness. ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಅದು ಈಸಿ ಸುಲಭ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ I think see ಏನಾಗುತ್ತೆ, we always want to become something, right? We have to accept the being nothing. Right? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ even difficult for a monk. ಸನ್ಯಾಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸಂಸಾರ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಾಮಿನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಚನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಟಲ್ ಈಗೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಟಲ್ as it becomes subtle, you try to catch hold of that, because without that you will become nobody. Understand? So the enlightened being is nobody. Yeah, that he doesn't want. He wants to. So if you accept yourself as nobody, you are free. And that nobody is infinity. Somebody can be only finite. Yeah. So nobody in the ಹೆದರಿಕೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. You want to become somebody. Hold on to something. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ hold on, some identity. That misnomer. Nobody means I'm nothing. Somebody and the something anta. But somebody is Nobody means no body. No body. When you don't have body, you are infinite. knowledge. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಬೌಟ್ 9:30. ಮುಗಿದಿದೆ ಸಂಜೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಜೆ 5 o'clock ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಜನ ಬಲಿದ್ರು ಉಪನಿಷತ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ RV Dental College, Bangalore University. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 11:30 ಬನ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ 3:30 ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಕರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ. ನಾಯಿ ಬಲ ಡೊಂಕ್ ಅಂತಾರ ಡೊಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ Even this is a ಮತ್ತೆ thought. ಮತ್ತೆ. Even this is a thought. ಹೌದು ನಾಯಿ ಬಲ Whatever you are saying no, is a thought. Right? You are not the thought. ಹೌದು. Yeah, it shouldn't affect even that. See, there are no not self-realized persons. Everybody is self-realized, enlightened. They don't know that they are self-realized. Huh? They don't know it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. Are there there's a mistaken identity. Okay. Sir, sir. What was? Huh? ಕೀ ಚೈನು ಖರ್ಚೀಪು ಪುಸ್ತಕ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ Any questions? See, self-realization is very simple. The more I leave things, Who I got? Who got? right now my mind is thinking that My mind is also yeah. a concept. Yeah. The mind is thinking is the right word. You have no relation with the mind. Few days that forcefully we need to reinforce that. Then it will become a second habit. Like morning when we get up, we go to the toilet. It's like a second habit. So once that sets in, that realization will happen. Next 2 days I am going to Yeah, I mean that's why I am here. I've been trying so many times to come. It's never happened. Yeah, I told her this is the opportunity. She's on leave. I said better come. कसं पण येत असतं का नाही आज येऊच असेल say after knowing you need to purify the mind through service and acts. So the mind always gets polluted by interaction. So you have to constantly like wash your teeth. You have to keep on. Okay. Do you have a husband? Do you have a husband? My present whatever. Do you have a husband? Just telling it, that thing has to become a second thought. That's why I'm just trusting. I was seriously looking. What is this? Drop all objects, then what remains is God. God is not object. Right? When we say God is in Vaikuntha, we are making God as object. He's sitting there. When you are saying God is in Kailasa, we are making God object. Is there something wrong? It's a fundamentally wrong concept. God can never be object.
idols. Sir, They're all there to give some temporary consolation to human mind. Human mind is always in pain. So for a painkiller is given. But the problem is for a painkiller, these are all painkillers. But how long you can live with the painkillers? It requires a surgery. See, enlightenment is not result of any practices. Yeah, that I you told me. Enlightenment is clarity. Then our practice have to apply it. All practices? Or to apply it consistently. Like Vipassana, all those things now. You have to apply your enlightened wisdom. You don't get enlightenment through practices. It helps. It helps maintain that equilibrium. It helps to purify the mind. The mind becomes much more purer and purer. It helps to retain that clarity. That clarity. So when you're saying it helps to retain that clarity, it means that clarity is not permanent. You forget now, the moment you go outside, you become a body now. No, but we call a person self-realized only when he does not forget. That's what I'm saying. Right? So you'll get off and on, you get forget and come back. So all these practices are required to hold on to it. Stay to that state. There's no state. Drop. Vipassana means dropping the body, mind and intellect. Vipassana. Continuously watching the body. Why you're observing the body? Because you're observing, you're separating yourself from the body. It will help to separate. If you don't know, you'll still get trapped. You'll get addicted to Vipassana. Understand? What Buddha taught is by observing, you'll be separated. So that is not taught here. So then what happens? Continuously keep on observing. You become addicted to that meditation practice. Both are required, right? This knowledge and this practices. Knowledge is what liberates. Meditation is what purifies. The mind becomes more and more purer. Subconscious impressions keep coming. How do I, like, for a normal person, it's not possible. He can meditate, but for him, it's very difficult to find out what is right knowledge. Whether what, like you are giving, I am assuming that you are giving. See, right please understand, now you cannot meditate, you cannot do meditation learning from books. You cannot do meditation through friends. You have to learn meditation from Guru. A right Guru will give the jnana first and then teach meditation. Wrong Guru will teach meditation first and then try to find out jnana. It won't work. Can you understand? But, But what? why do then self-realized people meditate? They don't meditate. Some people do meditate. Are there anybody self-realized person who can meditate? No, like It's a paradox, no? I remember, like Meher Baba, he used to go into silence and meditate for long hours. People say from external symptoms he meditates. And what He's just there, that's all. Am I talking? From external perspective, I am talking. No, but if you say that you are everywhere, then why can't you talk through this body? Why through only that body? Are you talking now? Are you talking? The consciousness in you makes you to talk. Isn't it? So I am talking through your body also. Your concept of me is the body. The concept of me is not the body. My concept of me is consciousness. Is there a difference? Isn't it? But this right knowledge cannot come by our own self, right? Very difficult.
It can come So for conscious- rare souls. Consciousness everywhere it is. Everywhere. Inside, outside, top, bottom. Everywhere. It's. Atma is not just inside. Atma is everywhere. Okay. Don't think Atma is sitting somewhere inside. Yeah, we all these days we thought it like that. Tomorrow morning I'll teach you how Atma, what is Atma. Right? सब हो गए इनको 15? Any questions? रेखा इलो उधरो रेखा ने ना बताया बिट्रे Like in Gita, in one quote, Krishna calls himself Mam Bhut Maheshwaram. Shloka is here. What does that mean? I am the master of all living beings. Yeah, that is somewhat difficult to understand. The consciousness, no? The Without consciousness. without the consciousness, Same idea. Ah, What you're saying. same. I told you, no, that this thing, no, this doesn't move. But without this, all living beings operate around that consciousness, like electricity, no. So somebody speaking from consciousness perspective, I am there everywhere, he can say. Right? But it's not your everywhere concept. Your everywhere concept is body. That everywhere concept is electricity. So anybody has a question? Abhishek, questions hai? Are you self-realized? No. What makes you no? Say no. What makes you say no? Self-realization is not so easy and So do you agree, Pragya? I am still identifying myself with a lot of things. Who is identifying with you by something, lot of things? My mind, So what about you? me, nothing actually. Huh? So your mind is identifying, but what about you? You are the mind? So are you self-realized? ನಮ್ಮ ಕೋಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಖುಷಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಮಲ್ ಆರ್ ಯು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ Knowing what I am is different from to be what I am. ಎಲ್ಲರೂ ಪಜಲ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ I just know what I am. You are that. So what's the difference? Being and knowing. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ರೇಖಾ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮದಾನ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಧನೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಞಾನ we trust ಬಂದಿದೆ. you that's why we believe that we are we are nothing but Atman and all. ಅಲ್ಲ ಹಾ. ಸರ್ ಅದು But the concept of identification has not actually gone. But have you understood what Atma self relation is? ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಞಾನ understanding. ಬಂದಿರುತ್ತೆ Matlab, if you understand totally, then actually the things will drop. So there is no proper. Matlab, you cannot if you found then proper understanding, because once you see something, then you know it is. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ವೇ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾ. ಯಾವ್ದಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ बरते क्या आपको आत्मज्ञान आ गया नहीं आया किसको नहीं आया आत्मा को कोई आत्मज्ञान चाहिए आत्मा क्या होता आत्मज्ञान बेका आत्मा को आत्मज्ञान चाहिए किसको चाहिए आत्मज्ञान ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ body is a machine mind has to get the clarity है ना mind has to get the clarity right so are you married Pragya huh
Very simple question, ordinary question. Huh? Who am I then? So you're not married. That you don't have confidence. Insecurity will come inside. Fear will come. This is a trick of the mind. Right? You understand? She knows the Atma cannot be married. But to say I am not married, the mind will be great fear. क्या समझ गया आपको? हाँ? आपको शादी हो गई? नहीं, ये देखिए कल तक तो शादी हो, राइट? आपकी क्या हालत है? अभी बोलेगा तो नकल हो जाएगी। नकल हो जाएगी। कोई तो असल बोल दीजिए। नहीं हुई। नहीं हुई। See, Atma has no birth, no death, no marriage, nothing. Whatever is happening in the mind. You know? Yeah? So the mind has built layers and layers of concepts. Self-realization is the demolishing that layers. Are you getting what I'm saying? With proper awareness. Atma, nothing is required. No birth, no death, nothing. Right? But who requires is the mind. The whole spirituality is purifying the mind. सारे स्पिरिचुअलिटी है मन को शुद्धि करना. मन को शुद्धि दो तरीके से करते हैं, एक सेवा करने से और ज्ञान से. सेवा, ज्ञान और मेडिटेशन, भक्ति जो करते हैं वो सबसे. लेकिन आत्मा को कोई ज्ञान नहीं चाहिए. आत्मा सदाकाल शाश्वत, उसको जन्म नहीं है, मरण नहीं है, अज्ञान नहीं है, बंधन नहीं है, कुछ नहीं है. जो इसको क्रिएट करता है ना वो उसको बोलते हैं मन. सारे साधना मन को शुद्धि करके शुद्ध मन से आत्मा से मिलना, यही साधना है. और मन कैसे शुद्ध होता है? ज्ञान से ही शुद्ध होता है. आप मेडिटेशन करने से मन शुद्ध होता है, प्राणायाम करने से मन शुद्ध होता है? नहीं, ज्ञान से. प्राणायाम सहाय करता है, मदद करता है, विपश्यना में मदद करता है, लेकिन ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है. समझ गए? आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है. आप सबको पता हो गया आत्मज्ञान क्या होता है? किसी को डाउट है? अभिषेक, खुद तो एंटरटेनमेंट दे दो यार. लोग वेट कर रहे हैं, अब अभिषेक आएगा, अभी कुछ एंटरटेनमेंट देगा. Clear? Any doubts? ಕೋಮಲ್, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾವ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಲಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. शरीर मन और बुद्धि से we can say somebody is husband and married, right? ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ? somebody told you? ಪ್ರಜ್ಞಾ? But still you call somebody as a husband? Yeah. How? That's how the society has tuned to my head that this is what it is. After a marriage, this person will be called your husband. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗಳಿಗೊಂದು ಇವ್ರ ಗಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಾ? किसी ने आपको बोल दिया कि ये आपका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड है, जब पूरा बार बार बोल दिया क्या? हाँ? एक बार बोल दिया तो हो गया ना. और उसको ठीक तरह से पकड़ के रखते हैं, हाँ, बांध के रखते हैं ना.
ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನ್ಮ 7 जन्म बिड़ला 7 जन्म नहीं छोड़ते हैं। एक बार बता दिया तो ये मेरा बीवी है फंस गया है ना। हाँ कितना बार बताया, एक बार भी कोई नहीं बोलता है बीवी है, वो कुछ तमाशा चलता है इसको ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, उस तमाशे से आप समझते हैं कि आप बीवी बन गए वो हस्बैंड बन गया है ना। और सारे जिंदगी जीते हैं ये मेरा हस्बैंड है मेरा बीवी है। किसी ने नहीं बोला आपको, और किसी ने बोला एक बार बोला ये हस्बैंड है ये वाइफ है, आप तो उसको ठीक तरह से पकड़ लिया। गुरु आपको बार बार रोके बोल देता है कि आप आत्मा है उसको यहाँ पकड़ने नहीं छोड़ता है। वहाँ पकड़ने इसलिए पकड़ लेता है। ये तमाशा देखिए। हाँ ये आपने किसी ने बोला लेकिन फिर भी आप बोलते हैं मेरा हस्बैंड है मेरा वाइफ है मेरा हस्बैंड है मेरा वाइफ है बोल के घूमते हैं। गुरु ने आपको बोल दिया बार बोल दिया आप शरीर नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है। ये तमाशा देखिए। हाँ छोड़ना मुश्किल है ना, पकड़ना आसान है। ओ ये छोड़ना मुश्किल है आपको पता नहीं है। एक्सरसाइज बनाना है। आप बनाना एक्सरसाइज कभी किया क्या? अभी बनाना एक्सरसाइज करेंगे। कौन बोल रहा है छोड़ना मुश्किल है? छोड़ना मुश्किल है निम्ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? बनाना एक्सरसाइज ಮಾಡಿದಿರಾ? ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ? हाँ अभी बनाना एक्सरसाइज करते हैं। ಓಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? छोड़ना if you get to eat one then I will take it. हाँ छोड़ना मुश्किल है किसको छोड़ना मुश्किल है? ओके My mom was like, let her hold my hand. हाँ छोड़ना मुश्किल आपको है? असर है हैंड पर ऐसा ले ले। हाँ अभी ऐसे खाना नहीं ऐसे लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ के रखना है। हाँ लेफ्ट हैंड हाँ हाँ और एक आधा घंटा में लेक्चर करते हो आप हाथ को नीचे उतारना नहीं। हाँ अच्छा है सब अच्छी दिखाई देते हैं। ओके सो दिखाई देते हैं हम कैमरा में फोटो भी लेते हैं। बनाना एक्सरसाइज ओ इधर ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡಿಯಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪವರ್। हाँ ये प्लग लूज हो गया है वो हाँ आएगा दबाते रहो। हाँ ಈಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು। ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಭಾಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿದಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು हाँ हाथ नीचे नहीं रखना ऊपर ज्यादा ऊपर करके जल्दी छूट जाएगा। फिर से करो हिलाते रहो। हाँ हाँ अब बताइए पकड़ना है मुश्किल है छोड़ना मुश्किल है? छोड़ना इजी है बस। ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಗ ಮಗಳು ಅಂತ हाँ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸಾರ ಜೀವನನೇ ಇಷ್ಟು ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತೀಯಾ? ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಮನ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಡ। ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೋದು? ಬಿಡೋದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಗಂಡ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಾನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ क्या अभिषेक ये क्वेश्चन छोटा आसान है एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखे हैं and just because you are holding that concepts you are getting success in life। क्या जी कोई प्रश्न है? आत्मज्ञान कैसे आता है अभी बोलिए कौन पूछ रहा था आत्मज्ञान कैसे आता है? आत्मज्ञान कैसे आता है आपने पूछा ना कैसे आता है? छोड़ देना और वो मुश्किल है आसान है? आसान है।
बताइए और क्या सीखना है आपको, और 2 दिन बचा है। So Pragya, what else you have to learn? The knowledge is there now that how to maintain that continuously in an outside world. Here we'll understand that once we go out, when we are doing our daily routine work, to reinforce that concept on a day-to-day basis and to So maintain that's why you have to say the mantra. What mantra? ನಾನು ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ये शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ। सच्चिदानंद आत्मा शिव ही मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बस इतना ही सीखना है, इतना ही जपना है। यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं। ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನದು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಒದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಡೆದು ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಅಭಿಷೇಕ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? No questions. So then we will close for today. Tomorrow morning we'll meet at 9:30. All right? In the night you can think over if there are any questions. So आज को बंद करेंगे और कल सुबह 9:30 को शुरू करेंगे. Then I booked cab at 8:30. it's okay. What is the time now? 7:50. It's okay. I'm going to Bedandu, but I will drop him on the way. If anybody needs drop, then can come with me. तुम किस जी? Oh, bike. So any questions are there? What else you have to learn? Please tell me. You have to ask me questions. Otherwise, what I'll teach. स्वामी जी, जब शरीर मन बुद्धि नहीं है, वो अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया सही तरीके से, तो मीन्स भगवान की इच्छा हो गया, नहीं तो सब हमारी इच्छा है, ऐसा मानते हैं हम लोग। हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में क्या फर्क होता है कल बता देंगे। आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा में तो बहुत तो फर्क है। आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा क्या होता है कल याद कर दीजिए मुझे, सिखा देता हूँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में क्या फर्क होता है? रॉबिन, यू हैव एनी क्वेश्चंस? हाँ? I have one question about that Panchkosha, some Vedanta text they describe. Ah. Like somewhere I read something like when you meditate or do something, go deeper and deeper into spirituality, you will transcend one by one each kosha and going to deep and deep. Once you cross the 5th kosha, suddenly that thing expands. That's all wrong understanding. I mean, it's an explanation. Yeah, explanation something like that. So what I am taking you is beyond 5th question straight away. by teaching, this teaching is actually helping you to go beyond 5th kosha. So those things are required. Tomorrow we'll take some aspects of that. That's only for understanding purpose. Some people say that just when you touch it, it expands into whole Brahman or something. Galat understand. That is all. Who tells that?
Listen to the lecture, online video. हाँ गलत है. Either it's वो गलत बोल रहा है और आप गलत सुन रहे हैं, दोनों भी हो सकते हैं. अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे. ये मेडिटेशन क्या होता है? व्हाट इज मेडिटेशन? To allow any thoughts to come, to keep the mind healthy, calm. You don't allow the thoughts to come. I mean, we not affected by the thoughts. The thoughts will come. Thoughts, let it come. You are not identifying with the thoughts, right? You're just watching. Just be aware. Not identifying with thoughts is meditation. Meditation is not dropping thoughts. Don't have to. Don't have to force anything. Okay? Meditation is not identifying with thoughts. If you don't identify with thoughts, thoughts will die natural death. You have thoughts because you are identifying with the thoughts. Right? Thoughts will keep on giving birth to more thoughts. Abhishek? Any So question? desires are hard to leave actually, because what you want to achieve or what you want to do, it's very difficult to actually leave it. So I'll teach you tomorrow how to drop the desires, how to have right kind of desires, and to drop desires which won't allow you to progress. And there are some things which you do because then the self improvement won't happen. Not the real self improvement. Did I tell you any time you have to drop desires? In my whole of talk, have I told drop desires? Have I told? But then all the things are because of desire and fear. Because you Yeah, but did I tell to drop desires? No, I didn't tell. So where did you get the concept that desires will be dropped? But then when you have desires, then you have fear, then you have that's a cycle. You have is different from one who is having, no? Another. I will have, but I am not desire, no? I'm not. Right? So you have to be clear what you have and what you are. That's enlightenment. Then what will happen? What you have, you will start organizing it properly. Once you start identifying with what you have, you cannot organize properly. That is told in the story of Mahabharata. Mahabharata is katha ಹೇಳ್ತಾರೆ. Right? This is the example actually. In महाभारत में वो धृतराष्ट्र होता है. धृतराष्ट्र उसको अंधा है ना? उसको 100 बच्चे हैं. उनको दुर्योधन और आदि 100 बच्चे हैं. और धर्मराय और 5 पुत्र हैं. उसका भाई का बेटे हैं. लेकिन धृतराष्ट्र क्या करता है? अपने बच्चों का जो भी गलती होती है उसको सुधारता नहीं. उसको बोलता है मेरा है, अपना है ना? ये एक्चुअली फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं है. ये आंखों का ब्लाइंडनेस नहीं है. वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस नहीं. स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, इट्स एग्जांपल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस. वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का एग्जांपल है एज गिवन एज ए ब्लाइंड. स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में क्या होता है? जो अपने आप समझते हैं आपका है, उसके बारे में आप विचार नहीं करते हैं. जो होता है आपके, जो होता है, मेरा बच्चा गलती नहीं करता है लेकिन दूसरों का बच्चा गलती करता है. मैं कभी गलती करता हूं, आप गलती करते हैं. हाँ कैसा? आई एम ऑलवेज राइट, एवरीबॉडी एल्स इज रॉन्ग. क्यों? जो मेरा है उसमें कभी गलती नहीं होता है. समझे? जब हम किसी चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम क्या होता है, वो उसमें हमारा ब्लाइंडनेस आता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस. नाउ जब when we don't identify, we clear, then we don't get into errors. That's what is told in the story of Mahabharata as a feud of family feud. So आपका प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन एंड गेटिंग ट्रैप्ड विद डिजायर्स बिकॉज द
identification. Once that identity becomes more and more clear, then you will not get trapped by anything. You will have certain desires, you will not have certain desires. You will choose the desires, and what you write, you keep it. What is not right, you drop it. That will come to that stage. An enlightened being doesn't have desires. No, he has desires, but some desires which are useful, he keeps it. Some desires which are not useful, he throws it out. But you don't have the ability to selectively and choose and throw, because your discrimination is lost in the identity. But we will get into that. Tomorrow, as we get into the details, that will become more clear. You remind me about that, desires. Anybody has a question? किसी को प्रश्न है? So Robin Suri, आप हरियाणा से तो आ गए, इतना दूर तक आ गए, सुनने के लिए तो बस इतना ही है. हाँ, पैसा वसूल हो गया टिकट का. आप समझ रहे हैं कि आत्मज्ञान में और कुछ है, बचा है, और कुछ नहीं बचा है. हाँ? बहुत कुछ बचा है ज्ञान में और समझने में. Okay, we will come to meditation. Meditation means not identifying with the thought, being aware, let the thoughts come and go. When you open your eyes, you see the world, है ना? You see the world. When you close eyes, what happens to the world? World disappears, right? But not really. The memories of the world is stored. The memories of the world keeps coming, like a record. Correct? So, the memories of the world are not you. Just watch it. Be aware. Don't identify with that. If you don't identify with that, that memories will just disappear, closed. Unwanted memories will go. Just watch. Make the mind more and more silent so that you are able to watch. That's what is meditation. Correct? So meditation, one process, I'll just say, keep your hand here on the stomach. I'll explain. Keep your hand there. And when there is a breath, the stomach moves upwards. When there is a down, leaving the breath, the stomach moves inwards, out and in. Bahar or andar. Bahar or andar. So, bahar or andar. It goes outside, inside. Don't force it. Naturally let it happen. So when you do that, the mind becomes slower and slower. मन शांत होने लगता है. And the mind becomes more and more deeper and slower. The breath becomes deeper and slower. Naturally. Then, who are you? आप कौन हैं? वो मन को देखने वाला साक्षी है. आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है. You are not the body, you are not the mind. मन को देखने वाला आप हैं. उसको साक्षी बोलते हैं. वो साक्षी ही भगवान है. समझ गए? Just switch off this light. Enough. Or should I switch off? No, it's okay. Keep close your eyes.